Hello everyone. So today we'll be doing question number 6 of exercise number 7.6. The first to fifth questions हैं. I've already made a video on that. तो अगर आपको उन questions में doubt है exercise number 7.6 के, तो you can go and watch that particular video. But today we'll be focusing on this question number 6 to ninth. Mostly I'll try to finish these four questions in this video. तो यहाँ पे question number 6 पे हम देख सकते हैं कि we have got a piece of wire which is 7.7 by 8 meter long. It broke into two pieces. One piece was 1 by 4 meter long. How long is the other piece? तो यहाँ पे आपके पास एक वायर था which was 7 by 8 meters long और वो दो टुकड़ों में टूट गया. तो एक टुकड़े का इनने लेंथ तो 1 by 4 मीटर दे रखा है आपको. तो पूछा है इनने कि जो दूसरा इसका पीस है, जो दूसरा टुकड़ा है, उसका लेंथ कितना होगा. So for that what we'll need to do here is we'll just subtract 7 by 8 minus 1 by 4, so we'll get the uh, length of another piece. तो यहाँ पे अपने पास 7 by 8 minus 1 by 4 will be what? बेसिकली हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. हमें 1 by 4 को, यहाँ पे जो 8 और 4 है उसका बेसिकली एलसीएम क्या होगा, 8 होगा. तो ऑलरेडी यहाँ पे 8 है ही सही, तो हमें इस 4 को 8 में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो फॉर दैट आई हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2 इन डिनोमिनेटर एज वेल एज इन द न्यूमरेटर. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 7 by 8 minus 2 by 8. So the answer will be 8, जो common denominator है that we'll retain, and I'll subtract 7 minus 2, that will give me 5. So the answer will be 5 by 8 meter. The length of the wire which we were trying to find, वो जो broken piece था, दूसरा टुकड़ा उसका जो length है that will be 5 by 8 meter. Moving on to the seventh question. Seventh question says Nandini's house is 9 by 10 kilometer from her school. तो नंदिनी का जो घर है उसका स्कूल से जो डिस्टेंस है घर और स्कूल का, दैट इज 9 by 10 किलोमीटर. शी वॉक सम डिस्टेंस एंड देन टुक अ बस फॉर हाफ किलोमीटर. तो कुछ डिस्टेंस तो उसने वॉक किया और फिर उसके बाद उसने एक बस ले ली. मतलब हाफ किलोमीटर जो बाकी बचा हुआ था उसका स्कूल पहुंचने के लिए, उसके लिए उसने हाफ बस ले ली. तो वो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया बाय वॉकिंग, दैट्स व्हाट दिस क्वेश्चन इज आस्किंग. तो उसके लिए भी हमें सेम सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 9 by 10 by 1 by 2 को. तो हाउ कैन वी डू इट. 9 by 10 minus 1 by 2. तो यहाँ पे एलसीएम 10 और 2 का बेसिकली क्या होगा, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल विल बी 10. सो बेसिकली यहाँ पे 9 by 10 minus 1 by 2 into 5 I'll have to do. 5 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो it will become 9 by 10 minus 5 by 10. So the answer which I'll get is 4 by 10. So this 4 by 10 kilometer, we always need to remember to put this unit, है ना. तो the distance traveled by her by walking was 4 by 10 kilometer. इसका हम simplest form भी निकाल सकते हैं. It will be 2 2s are 4 and 2 5s are 10. So basically it will become 2 by 5 kilometer. Now moving on to the eighth question, it says Asha and Samuel have bookshelves of the same size partly filled with books. So there are two girls, one is Asha and another is Samuel. I don't know if Samuel is a girl or he's a boy. Uh, they have got bookshelves. उनके पास bookshelves हैं जो दोनों same size की हैं और उसके अंदर थोड़ी थोड़ी बुक्स भरी हुई हैं. Asha's shelf is 5 by 6 the full and Samuel's shelf is 2 by 5 the full. Whose bookshelf is more full by what fraction? तो ये पूछ रहा है कि मतलब इसने बताया इस क्वेश्चन के अंदर कि आशा की शेल्फ तो 5 by 6 भरी हुई है, जो टोटल उसके पास जगह है उसमें से 5 by 6 वो भरी हुई है, और सैमुअल की जो शेल्फ है वो 2 by 5 फुली भरी हुई है. तो ये पूछ रहा है किसकी बुक शेल्फ ज्यादा भरी हुई है और बाय हाउ मच फ्रैक्शन, बाय व्हाट फ्रैक्शन इट इज मोर. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट हुज बुक शेल्फ इज मोर फुल. तो हमें इन दोनों फ्रैक्शंस के अंदर कंपेयर करना पड़ेगा विद दैट विच फ्रैक्शन इज बिगर, so that we can say that yeah this fraction is bigger, that's why इस बंदे की या फिर इस बंदी की लाइक इस लड़की की जो शेल्फ है, बुक शेल्फ है, वो ज्यादा भरी हुई है. so here we have got two fractions which is, sorry, it is 5 by 6 and one fraction is 5 by 6 and another is 2 by 5. 2 by 5, so what will be the LCM of 5 and 6? It will be 30, I hope so. बट स्टिल अपन यहाँ पे निकाल सकते हैं. 2 3s are 6, 5 3 1s are 3, 5 and 5 1s are 5. So basically the LCM of 5 and 6 is 30.
So I'll have to convert this 5 by 6 fraction उसका ऐसा equivalent fraction find करना पड़ेगा, so the denominator comes 30. It will be 5 into 6 into 5, and then लिख सकता हूँ 5 by 6 is equals to into 5, so it will become what, 25 upon 30, which is same हमारे पास fraction है 2 by 5. इसको करूँ मैं 2 by 5 is equals to, so 2 by 5, 5 into 6, 2 into 6, so it will become 12 upon 30. So basically here this one was Asha's bookshelf, this one was Samuel's bookshelf. So by comparing these two fractions 25 and 30 and 12 and 30, we can say that 25 by 30 is greater. That's why हम conclude कर सकते हैं कि आशा का जो शेल्फ है वो ज़्यादा भरा हुआ है as compared to Samuel's का bookshelf. Now by what fraction is it more? For that we'll have to subtract 25 by 30 from सॉरी 12 by 30 फ्रॉम 25 by 30, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 25 by 30 minus 12 by 30. So the answer which I'll get is 3 and 1, 13 by 30. So here I could say that Asha's bookshelf is more filled as compared to Samuel's bookshelf by 13 by 30th of the fraction. Okay. So that's how you're going to solve this 8th question. Moving on to the 9th question, which is the last question of this exercise as well as of this chapter. So what does this question says? It says Jaidev takes 1 by 5 minutes to walk across the school ground. Rahul takes 7 by 4 minutes to do the same. Who takes less time and by what fraction? So kind of similar question है. 8th और 9th सेम, बस इसके अंदर एक मिक्स फ्रैक्शन दे दिया तो हमें उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा. तो यहाँ पे जयदेव कितना टाइम लेता है? जयदेव टेक्स 1 by 5 1 by 5 minutes. Basically I can convert into improper fraction, तो क्या बन जाएगा 5 2 10, 10 plus 1 11, तो 11 by 5 minutes लेता है जयदेव, है ना. और अगर हम it's minutes है ना, MIN लिख सकते हैं पहले. And what about this other guy राहुल? राहुल कितना लेता है? इसका ऑलरेडी improper fraction में दे रखा था, तो 7 by 4 minutes. तभी पूछ रहा है कौन ज़्यादा टाइम लेता है, तो फिर हमें इन दोनों को लाइक इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करने पड़ेंगे सो दैट दे हैव द सेम डिनोमिनेटर, और 5 और 4 है नीचे, तो बेसिकली द एलसीएम विल बी 20. तो यहाँ पे I'll have to convert this 11 by 5 which was Jaydev's minutes. So 11 by 5 will convert into what? मेरे को इसको 20 denominator I need 20, so I'll have to multiply it by 4. So numerator भी 4 से multiply करना पड़ेगा, तो it will become 44 upon 20. And what about this Rahul? Rahul takes 7 by 4 minutes, so it will become 7 by 4 into 5 into 5. So ये बन जाएगा प्लस 35 upon 20. So basically now we can compare between these two fractions. So here 45 4 और 20 को अगर हम रखें इधर, और 35 और 20 को रखें, तो basically 44 by 20 is greater. That's why who takes more time, who takes less time they said, है ना. इसमें से कम टाइम कौन लेता है, तो we can say that this Rahul takes less time because इसका जो fraction है that is 35 by 20, whereas जो जयदेव का fraction it is 44 by 20. So basically it's Rahul who takes less time as compared to Jaidev. And by how much fraction? So for that we'll have to subtract these two. 44 by 20 minus 35 by 20 करना पड़ेगा मेरे को. So the answer which I'll get is एक बार यहाँ पे कर लेते हैं. 44 minus 35 it will be 14, तो ये हो जाएगा 5 5 और 9, it will become 3, so 0. Basically the answer is 9 by 20. So we can say here that Rahul covers the school ground, walks across the school ground faster as compared to Jaidev and by the fraction 9 by 20, है ना. और Jaidev is slower as compared to Rahul by 9 by 20 fraction. So that's how we are going to solve all these questions. तो अगर आपको कुछ भी डाउट है इनके अंदर, तो प्लीज़ डू कमेंट डाउन बिलो. Please do like and do subscribe if possible. So that's all for today. Thanks for watching.